भागवतम। कल देखा हमने भारत की कहानी कि कैसे उस राजा ने बहुत तिरस्कार किया जिनका ब्लैंकेट उठाए हुए थे अपने कंधे पे, और उतने तिरस्कार के बाद भी कैसे उन्होंने उस राजा को अद्भुत ज्ञान दिया अपनी अवस्था का और इस जगत के स्वरूप का। आज आगे चैप्टर 64, टाइटल Bharata teaches Brahma Vidya. Drained of all pride and arrogance by the words of Bharata, King Rahuguna fell at his feet and spoke in a voice choked with tears born of shame. He said, "My pride has been destroyed by you. Forgive me for my impertinence and please grant me a boon." ये वह राजा जो जिनको कैरी कर रहे थे कंधे पे, राजा Rahugana. "Please be gracious enough to tell me who you are. I am the ruler of Sindhu and Savira, and they call me Rahugana. I was on my way to the great Kapila to sit at his feet and learn Brahm Vidya from him. But you seem to be Kapila himself, who has come to me on his own accord to save me. To what good actions in my previous Janma do I owe this great good fortune that has befallen me? Please initiate me into the science of truth." देखो, कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था वो राजा, मगर इतने प्राइड से भर के पहुंच भी जाता तो कुछ ग्रहण नहीं कर पाता वहां पे। अच्छा हुआ भरत मिल गए रास्ते में। Bharata was filled with pity for this king, who seemed to be really eager to learn. He said, "I will try to help you and you will find the path to salvation. Listen to me very carefully while I'll explain it all to you." Bharata sat on a large slab of rock which was nearby, and the king sat most humbly at the feet of the master. Bharata then began his discourse on causes him either to fall into the morasses called samsara or to find freedom from it. It is the mind which should be subdued. When the mind is tainted with the three gunas, sattva, raj and tam, its path is set in the world of objects. It will have to keep on performing actions, good or bad, and the cycle of birth and death will be endless. It will acquire desires, and according to the desires, its progress will be towards the higher or towards the lower, as the case may be. Pleasure and pain will affect the life of man, and there will be no end to it. So long as the mind is attached to the things of the world, it can never glow on its own accord. Take the example of a little lamp. It has a wick, and the wick is fed by the quantity of ghee. When it burns, the flame will be colored because of the quality of the ghee which is feeding it, and the smoke and light emanating from it will all have the quality of the ghee. If, however, the ghee is all exhausted, the wick will then burn on its own accord and with a color and glow which is natural to it, and it will eventually be converted to nothingness. क्या बात है! जिस क्वालिटी का घी होगा दिया में, उसी क्वालिटी का धुआं निकलेगा, उसी क्वालिटी की अग्नि निकलेगी। कभी वो फ्लेम ब्लू हो सकती है, कभी येलो हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द घी। यानी हमारे प्रारब्ध के कर्मों और अभी के स्वभाव से जन्मे कर्मों जो कि त्रिगुणों से बने हैं, सत्व, रजस और तम से, उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि हमारी आग की क्वालिटी कैसी है और धुआं कैसा है। आग जो जगत को रोशन करेगी हमारे कर्मों से, और धुआं जो जगत को प्रभावित करेगा हमारे कर्मों से। तो हमारे कर्मों से दो चीजें हो रही हैं, एक रोशनी फैल रही है जगत में और एक धुआं फैल रहा है जगत में। उसकी क्वालिटी, उसके इफेक्ट की क्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन द
past karmas and the karmas which are now being formed based on the three gunas. और जब ये घी पूरा जल जाएगा, सारे कर्म संचित प्रारब्धगामी सब जल जाएंगे, तो ये जो विक है, अब ये विक स्वयं को जलाने लगती है और स्वयं को जला के विक खुद भस्म हो जाती है. That's when it all ends. कितना सुंदर उदाहरण दिया दिए का. बोला, and it will eventually be converted to nothingness. Even so, the mind, so long as it is fed by the gunas, it will become colored by them and act accordingly. When the gunas leave the mind, it will soon reach a stage when it will have no existence. Just as the wind pervades the entire space, the Lord pervades this entire universe. When the jiva sheds all attachment, conquers the six enemies, and illuminates itself with the lamp of wisdom, then the jiva will be free. But till then, he will have to go through the pain of being born again and again into this world. So the mind should be controlled if the senses and the six arch enemies have to be conquered. तो सेंसेस हैं और ये सिक्स एनिमीज की बात हुई है. इनके ऊपर बैठा है माइंड. सेंसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इन सिक्स एनिमीज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता. हेंस द माइंड हैज टू बी कंट्रोल्ड. And the mind, if it led toward the feet of the Lord, if it takes refuge there, then there is no fear of its losing itself in the forest called samsara. रहेगा तो जंगल में, बट कोई भय नहीं है अब कि वो जंगल में खो जाए. Once the jiva is set on the path called karma, it is beset with many pitfalls. Birth and death comprises this forest. एक लाइन समझ लो यहां. बोला है, Once the jiva is set on the path called karma, it is beset with many pitfalls. गलत समझ जाते हैं हम ये बात. इसका ट्रांसलेशन है कि जब हम कर्मों में जाते हैं, कर्म की दुनिया में जाते हैं, तो फंस जाते हैं. इस लाइन को पढ़ के बहुत लोग कर्म से भागने की चेष्टा करते हैं, भगोड़े बन जाते हैं. यहां मतलब है कर्म का, यानी जो कल हमने बात की, कर्म फल का और कर्ता भाव का. शब्द कर्म यूज कर रहे हैं, बट इसका मतलब है कि जब भी हम कर्ता भाव में जुड़ जाते हैं और कर्म फल में जुड़ जाते हैं, पिटफॉल्स, खड्डों में गिरेंगे. डूइंग से मतलब नहीं है यहां, डूअरशिप से मतलब है यहां. Birth and death comprises a forest. The jiva gets lost in this forest, deluded in many ways, deluded mostly by Maya. The three gunas make him perform actions which are good, bad, or indifferent, and in proportion to them, he acquires a certain amount of punya or papa. The aim of the jiva now becomes the pursuit of happiness, and in this search of happiness, he gets lost in this wilderness called samsara. ये सुख की अभिलाषा ही फंसा रही है आदमी को, और उसको अंतर नहीं समझ में आ रहा सुख और आनंद में. The six senses are well nigh six thieves who steal on you when you are unaware of their approach, and they rob you of your wisdom. They make you become attached to woman, home, child, money, wealth, power, and such likes. You get involved in Maya and are helpless in finding your way out. You are then well established in Grastha Ashram, which is indeed a very sad state of affairs. You are then well established in
Grahastha Ashram, which is indeed a very sad state of affairs. The earth, though it looks as though all the plants have been removed from its surface, in reality, it's not bare. The seeds which have already been buried in it will sprout forth in no time, and this cycle will go on, and until the seeds are burnt away, there is no escape. The Grahastha Ashram is like a box of camphor. In course of time, the camphor gets sublimated and it looks as though the box is empty. देखा camphor उड़ जाता है. And it looks as though the box is empty. But the smell, which is the vasana, is still remaining and it will cling to the box. So long as the box has an existence, so long as the box has an entity, the vasanas will persist and it will remain part of the box until the box is completely destroyed. आज बहुत अद्भुत बात हो रही है इसके अंदर. अच्छा टाइटल दिया, ये ब्रह्म विद्या की बात हो रही है आज. खोलते हैं अभी इसको थोड़ा पढ़ के. Once you get involved in the ashrama by name Grahastha, there is no salvation for you. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mad and Matsarya, the senses and the mind which is the master of the senses, all these will lure you away from the path to salvation. बॉक्स का उदाहरण दिया है. लाइन अच्छी थी यहां पे. कहा था so long as the box has an entity, the vasana will persist and it will remain part of the box until the box is completely destroyed. इस बॉक्स को हम शरीर भी मान सकते हैं या गृहस्थ आश्रम भी मान सकते हैं. इस बॉक्स को हम कुछ भी मान सकते हैं जब तक उसकी एंटिटी इज डिफाइंड. यानी अगर इस बॉक्स को मैं शरीर मानता हूं और शरीर को मैं मानता हूं तो शरीर की एंटिटी डिफाइन कर दी मैंने. आई एम आइडेंटिफाइड विद द बॉडी नाउ. बॉक्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी. जब तक मेरी चेतना किसी भी चीज से आइडेंटिफाई कर रही है, बॉक्स है. अगर मेरी चेतना इस शरीर से आइडेंटिफाई कर रही है कि ये मेरा शरीर, ये मैं, तो बॉक्स है. अगर मेरी चेतना मेरे मन में उठे विचारों से आइडेंटिफाई कर रही है कि मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मेरे बिलीफ्स, मेरे फेथ्स, मेरे परसेप्शंस, एंटिटी है. अगर मेरी चेतना मेरे गृहस्थ आश्रम से आइडेंटिफाई कर रही है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा नाम, मेरा यश, आइडेंटिटी है, बॉक्स है. जब तक ये बॉक्स नष्ट नहीं होगा, वासनाओं की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी. तो क्या तन को तोड़ दूं? गृहस्थाश्रम को खंडित कर दूं? नो नो नो. चेतना जो आइडेंटिफाई हो गई है इस तन से, इस मन से, इस ग्रस्त से, उस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना है मैंने. ध्यान रखो, कर्म को नहीं तोड़ना है यहां पे, कर्ता भाव को तोड़ना है. कर्ता भाव जो जुड़ जाता है, जो आइडेंटिफाई करता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए ये काम कर रहा हूं. आइडेंटिटी. द प्रॉब्लम इज इन दिस आइडेंटिफिकेशन. इसको रिमूव करते ही बॉक्स टूट जाएगा. और बॉक्स के टूटते ही जो उसमें खुशबू है कैम्फर की रह गई, जो वासना उड़ गई, वो भस्म हो गई. दिस आइडेंटिटी. ये शब्द क्या मेरे हैं? ये जो मैंने लिखा क्या ये मेरा है? ये जो मैंने दृश्य बनाया क्या ये मेरा है? ये जो अच्छा भोजन बनाया, जिसकी प्रशंसा हुई, क्या ये मैंने बनाया? ऑल ऑफ दिस. दिन से रात तक प्लीज विटनेस, ट्राई एंड कैच होल्ड ऑफ न्यूमरस आइडेंटिफिकेशंस दैट वी फॉर्म.
within ourselves and outside of ourselves. और ये आइडेंटिफिकेशंस कर्मों से गहरी हो जाती हैं. जब कर्ता भाव होगा तो आइडेंटिफिकेशन गहरी हो जाएगी. Think of the life on the earth. There is so much pain, loss, happiness, sorrow, love, hatred, fear, delusion, madness, avarice, jealousy, hunger, thirst, pain in the mind and pain in the body. Birth and its arch enemy, death, are all there. Man has no time to think of the Lord, and he never keeps the company of saints who have renounced worldly things. समय नहीं है संतों का. संतों के साथ बिताने का समय नहीं है. संत पाद सेवा का ही समय नहीं है. Still, even in spite of all these drawbacks, if there is hope for man, if he controls the mind, if he learns the art of pulling the reins of the mind, if he can conquer the 6 enemies and turn his mind towards the Lord, he can be rid of the cycle of birth and death. This wisdom cannot be obtained by penance, not by performing your religious rites faultlessly, not by feeding 1,000 people, not by charities performed by grihasthas, not by chanting the Vedas, nor by the worship of gods. Only by falling at the feet of the saints and taking the dust of their feet and surrendering himself to a guru can a man attain salvation. Let a man then, desirous of getting freedom, spend all his time with the bhaktas of the Lord. He will then learn how to break away from the bondage called delusion, Maya. The stories of the Lord and the singing of his praises will guard his spiritual wealth from the thieves who are lodged in his own body. The 6 thieves, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mad, Matsarya. Soon, very soon, man will give up his ego and his mind will obey him. The rest is easy. जब हम ये शब्द पढ़ते हैं, ये 6 एनिमीज, तो एक राइम जैसा सुनाई देता है, विच हैज अ डेंजर. राइम जैसा सुनाई देने लगता है तो हम हर शब्द की गहराई को नहीं पकड़ पाते. राइम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राइम है ये. काम, हर प्रकार की डिजायर जो मन में उत्पन्न होती है, हर प्रकार की डिजायर. भोग की डिजायर सेंसेस के, नाम रूप की डिजायर, ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर आर कामा. और पिछले चैप्टर्स में बड़ा सुंदर था कि काम को नष्ट करना, खत्म करना बहुत मुश्किल है आदमी के लिए. कर सकते हैं, बट काम को ईश्वर पे लगाया जा सकता है. काम से शब्द निकलता है कामना. किसकी कामना है सब समय? ईश्वर की कामना में लगा देते हैं. अगर मैं अपने डिजायर्स, अपने काम, अपनी कामना को नहीं रोक पाता हूं, दिशा तो परिवर्तन कर सकता हूं. बहुत बार वेग को रोकना मुश्किल होता है, दिशा परिवर्तन करना आसान होता है. इसी प्रिंसिपल पे सेलिंग शिप चलती है सागर में. वो हवा को रोक नहीं पाती है, अपनी सेल को एडजस्ट कर लेती है. तो तुम भी अपनी सेल को एडजस्ट कर लो और इस काम को ईश्वर कामना में परिवर्तित कर दो. काम बन जाएगा. इस काम को ईश्वर कामना में परिवर्तित कर दो तो काम बन जाएगा. ये राइम अच्छा है. क्रोध जो अमूमन काम से उत्पन्न होता है, जब भी काम पे रुकावट आएगी तो क्रोध उत्पन्न होगा. कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारे काम के पूरा होने में
विघ्न जैसा प्रतीत होता है, क्रोध उत्पन्न होगा उसके प्रति। तो क्रोध काम की छाया मात्र है। लोभ, फिर भोग के बाद लोभ आ जाता है कि और चाहिए। थोड़े टाइम शांति रहेगी, बट थोड़े टाइम की शांति के बाद फिर लोभ आएगा कि और चाहिए। अब जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की कामना की और जिसको भोगा, अब उसके प्रति मोह जागेगा। मे बी इमीडिएटली, मे बी अ लिटिल लेटर। मोह यानी अटैचमेंट। अब ये फोन, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये परिस्थिति, ये प्रॉपर्टी से मैं अटैच हो गया। अब मद जागेगा, प्राइड। आई हैव मैरिड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, मिस इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब प्राइड आएगा कि मेरे पास इतना सुंदर व्यक्ति, वस्तु या गुण है। लेट्स से अपने गुण के प्रति भी प्राइड जाग जाएगा। देखो कितना सूक्ष्म है ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट, लिविंग और नॉन लिविंग। ये गुण भी हो सकता है, ये क्वालिटी भी हो सकती है जो लिविंग नॉन लिविंग के परे है। हवा जैसा है वो, उसके प्रति भी प्राइड, मद जागेगा। फिर आएगा मत्सर्य, ईर्ष्या का भाव। अगर किसी और के पास तुमसे बेहतर गुण है तो अब ईर्ष्या आई। तो ये जाल बन जाता है। और इस जाल की शुरुआत कहां से हुई थी? काम से। शुरुआत पे काम कर लिया जाए तो बात बनना आसान हो जाता है, फिर नहीं तो उलझाव बढ़ते जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस जैसा है। जब भी ये शब्द सुनो, एक सेकंड का पॉज लिया करो और एक एक शब्द को अलग अपने मन में दोहराया करो। इसको राइम की तरह मत सुना करो और स्लो अपने मन में दोहराया करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये एस्टैब्लिश हो जाए कि ये दुश्मन है बड़े भयंकर और किसी तरह से इनसे मुक्त होना है मुझे। O King, learn to renounce everything. Be compassionate towards all living beings. Sever the bonds of attachment to everything. With a mind pure and free, you will soon reach the other shores of this immense ocean called Sansara. And I assure you, then you will not come back. Rahugana prostrated before Bharata and said, My Lord, being born as a man is the greatest of blessings granted to the Jiva by the Lord. I am not jealous of the gods at all, since it is not given to everyone. Not even the gods have the good fortune of coming across great souls like you. I have had that unique privilege. By your company for just one muhurta, all my ignorance has been driven away. एक मुहूर्त, which is 48 minutes. 48 मिनट में इस ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को सुन के सब डिल्यूजन, इग्नोरेंस खत्म हो गया। I am rid of my pride and ego. You have taught me that there is only one duty for man, and that is to surrender to the Lord. I bow before you again and again. There is no other way in which I can express my gratefulness to you. Bharata blessed him and went his way to wander on the face of the earth as long as the Lord thought it fit to keep his body alive. ये भारत कितने मस्त है। इतनी ब्रह्म विद्या दी, एक प्रणाम रिसीव किया, एक प्रणाम दिया, चल पड़े। अद्भुत। तो नॉन अटैचमेंट की परिकाष्ठा है। तारीफ भी नहीं सुन रहे आपने, बस एक प्रणाम ले लिया और एक प्रणाम दे दिया और चल पड़े। नहीं तो आदमी ठहर जाता है कि थोड़ी तारीफ तो सुन लें अपनी। ब्यूटीफुल।
That's how chapter 64 ends. Chapter 65 title, Ajamila's death. ये अजामिल बड़े फेमस है, गुरु नानक की वाणी में भी इनका कथन आता है. Man absorbed as he is in worldly things, worldly pleasures, and the pursuit of worldly happiness, has his mind clouded by ignorance of the truth and about his real nature. To him, the eternal cycle of birth and death will always exist. It is only with the help of knowledge that the wheel can be torn, the chain can be snapped. Discipline is essential. By discipline is meant spiritual discipline. Just as a man who always eats clean, wholesome food will never be troubled by diseases, even so, a man who partakes of spiritual food will never suffer. This food is discipline. Controlling the mind is essential. Mental concentration on the Brahman, withdrawal of the senses from the sense objects, conquest of the mind in its wanderings in the morasses of the senses, self-denial, speaking the truth at all times, cleanliness, internal and external, compassion towards all living beings, abhorrence of stealing and avoiding receiving gifts from others. All these will help to destroy the ignorance in the mind like fire destroys a bamboo forest. Fire which is concealed in the bamboo itself. ये यम नियम बताए हैं बेसिकली. यम नियम के जो प्रिंसिपल्स हैं वही बताए हैं अभी, थोड़ा सा भाषा को परिवर्तन करके. बट हम तो आसन और प्राणायाम की जल्दबाजी में होते हैं, हम बस वही करते हैं. योग के नाम पे हमें सिर्फ आसन दिखता है, और जो योग का फाउंडेशन है, जो यम नियम पे आधारित है, ऋषि ने यम नियम पहले बोला है योग के से पहले, उस पे हमारा फोकस नहीं है. तो यहाँ यम नियम की बात हुई है. One's salvation is within one's own power, and it can be achieved only by one's own self. There are, however, some who have reached the Lord by unconditional surrender, sharanagati. Sundar shabd hai. Sharanagati. Their sins are destroyed like the snow by the sun. And a man who offers himself to the Lord reaches a stage higher than that of anyone else. This path of devotion is the highest and the most effective path. No tapas, no penance, no privations can equal this bhakti to the Lord. Once a man fixes his mind on the feet of the Lord, then sin and death will not come near him, not even in his dreams. So potent is the power of this yoga called Bhakti Yoga. There is an ancient story to illustrate the power of this bhakti towards Narayana. There lived a Brahmin called Ajamila in the country which was famed as Kanya Kubja. Though he had been born as a Brahmin, this man had fallen on evil ways and had lost all goodness. He was living in sin with a woman of the lower class. He who was once compassionate towards all became cruel. He became a cheat and gambler, and also he became avaricious. He would steal the wealth of others, and his life was full of sin. He would not protect his family, which was lawfully his. In short, he was detested by all. Ajamil की कहानी सुना रहे हैं. Time passed on and he was getting old. Of this low-born woman he had 10 sons, and the youngest of them was called Narayana. He was the beloved of his father and mother. Ajamil would spend all his time in the company of this child. In his extreme love for the son, the father thought of nothing else. While eating, he would not eat alone. He would call out to his son and say, Narayana, you come also eat this and eat before I eat. When he drank anything, he would first offer it to his son, saying, Narayan, you drink this first. Spending his time like this, involved with this woman and his children,
Ajamil never realized that death was drawing near. When death was very near, all his thoughts and actions were bent on his son, and he would speak only his name all the time. Finally, the dreadful messengers of death approached him. He saw them at a distance, and he saw his son Narayana playing in the country yard. In a falling voice, he called out, "Narayana, come to me, Narayana." And then he died. When he spoke the word Narayana, come to me, with his dying breath, the servants of Narayana heard him, and they came to him at once. The servant of that Narayana. They saw the messengers of Yama, the god of death, dragging the Brahmin's soul away from the body. Narayan's men stopped them. The Yamadutas were very angry and said, "Pray, who may you be that have the authority to prevent the servants of Yama from doing their duty? Where do you come from? To whom do you belong? Are you gods or demigods? Why do you stop us?" The servants of Narayana smiled at them and said, "If, as you say, you are the servants of Dharma, please tell us about Dharma. Tell us the criteria which governs the punishment meted out to people by Dharma. Who are the persons who should be punished? What are the punishable actions? Are only human beings punished, or does the rule apply to animals also? Tell us, since we are interested." तो नारायण के दूत यम के दूतों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं. देखो कितना अच्छा सीन बना है यहाँ पे. Yamaduta said, "Whatever has been ordained by the Vedas is Dharma. Dharma can well be called the very breath of Lord Narayana. What is not in accordance with the Vedas is called adharma. Dharma is the Lord himself. Those who do not follow the dharma prescribed for them are punished by Yama. Man lives by his actions alone. No man can be without action. And according to a man's actions, meaning according as they are good or bad, man is rewarded or punished. A man's future birth is determined by his actions in this birth, even as his present birth was determined by the actions he performed in the previous birth. Cause and effect की cycle चल रही है पूरी. Even as the season spring, this moment is but a continuation of many springs that have come and gone already. This spring will hold in it the seeds for the next spring. Seeds. हर चीज में आने वाले समय का बीज है. आज के काल में आने वाले काल का बीज है. इस मोमेंट में आने वाले मोमेंट का बीज है. Residing in the city called Samyami, the Lord Yama decides on the next birth of a man according to the actions of his in this birth. Man, however, in his ignorance, does not pay attention to the instability of the human body. His intelligence is clouded by ignorance, and he thinks that this body is the only one he has, and that this birth is the only birth he has. गलत जगह प्रेजेंट मोमेंट में जीता आदमी. उसको लगता है यही शरीर बस मेरा, यही जीवन बस मेरा. इस प्रेजेंट को प्रेजेंट मानते हो. डायकॉटमी देखो. जहां आगे पीछे सब देखना चाहिए, वहां सिर्फ ये क्षण देख रहा है. और जहां जीते जी जब बस ये क्षण देखना चाहिए, इन द मोमेंट, इन द सीड राइट नाउ, वहां वो आगे पीछे देखता है. What a dichotomy of life. His intelligence is clouded by ignorance, and he thinks that this body is the only one he has, and this birth is the only birth that he has. He does not think of his previous birth or the one to come. जो बात कर रहे थे, पुराने चीजों का उसको आभास ही नहीं है, इसलिए वही गलतियां रिपीट करता है वो. A man who is dreaming does not remember his body of the waking state, nor does he remember the body he has had while he was dreaming other dreams. क्या बात है. कह रहे हैं स्वप्न अवस्था में तुम्हें अपने रियल शरीर का आभास नहीं होता,
और स्वप्न अवस्था में पिछले स्वप्न के शरीर का भी आभास नहीं होता। कैसे इसको तुम अपना या परमानेंट मान रहे हो? क्षण में बदल रहा हो। Like a cocoon covered by silk of its own making, man covers his Atman by the results of his karma and deludes himself that he is bound. यानी जो आभास है बंधन का भी वो भी उसी का डिल्यूशन है। यानी in truth we are not bound. In truth we are all ever liberated. He cannot ever extricate himself unless and until he realizes that it is entirely within his power for him to free himself. We will tell you about Ajamila. He was once a good man, a very good Brahmin. He was a righteous Brahmin. He was well read, well behaved, and he walked in the path of Dharma. Once, when he had been to the forest to collect kusa grass, flowers and fruits for the worship of the Lord, which his father used to perform, Ajamila saw a drunken man making love to a low-born woman. The sight made Ajamila think of the pleasures of the body, of the senses, of the satiation to be got from them. He wanted to have that woman and the experience, the thrill which could be seen on the face of the man who was with her. सुंदर सूत्र है यहाँ पे। जो दृश्य देखते हैं उस दृश्य की कामना जागती है। अजामिला तो अच्छा आदमी था, अच्छा ब्राह्मण था, बट उसने एक दृश्य देखा और उस दृश्य की कामना उसके अंदर जागी। प्रश्न ये उठता है, हम सारा दिन कौन से दृश्य देख रहे हैं? इंटरनेट पे, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं? पॉर्न की समस्या तो हम सबको पता है, बट इवन माइनस द पॉर्न, कौन से वायलेंट दृश्य देख रहे हैं? नेटफ्लिक्स पे कौन से सबसे ज्यादा फेमस सीरीज या मूवीज है? और इस तरह के सभी चैनल्स पे कौन सा कंटेंट वॉच किया जा रहा है? क्योंकि जो कंटेंट तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग देख रहे हैं, वैसी ही कामना जागेगी उनके अंदर। कोई और कामना फिर जागेगी नहीं। क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, तुम्हारी सेंसेस से क्या कंटेंट, क्या फूड कंटेंट का जा रहा है तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारी कामनाओं को शेप कर देगा। बड़ा सुंदर सूत्र है। Ajamil tried his best to use his intelligence and his self-control, but it was all to no purpose. He had fallen a prey to the growing hunger to the flesh. It was just a matter of moments before he forgot all the learnings he had acquired and all the discipline he had undergone. सब ज्ञान धरा रह गया. He lost his way and strayed from the path of dharma. He became a slave to that woman and lost himself completely. He had to steal in order to satisfy her avarice, and he had to gamble. In short, all sins became natural to him. He abandoned his father, he abandoned his wedded wife, and he lived with this woman in sin. He is an adharmi, and therefore he deserved to be punished. ये यम के दूत नारायण के दूत को बता रहे हैं. Narayana's men listened to the words of the Yamakinkaras, which is Yamadutas, and then said, "All that you say about this man is true. No doubt he was a sinner. But at the moment when his life was about to leave his body, he called out, 'Narayana, come here.' And that has saved him from your hands. When his name is called, the Lord will never abandon. He treats that caller as his bhakta, and all his sins are washed white. This man is no longer a sinner in the eyes of the Lord, and he has therefore no place in the region of Yama. You may say that he did not mean the Lord when he called out Narayana.
ये अच्छी बात. यू मे से, शायद कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है. यू मे से दैट ही डिड नॉट मीन द लॉर्ड व्हेन ही कॉल्ड आउट नारायणा बिकॉज ही कॉल्ड हिज सन. तुम ऐसा बोल सकते हो. वी नो दैट. हमें भी पता है कि अपने बेटे को बुलाया था, उस नारायण को नहीं बुलाया था. ये बात हमें पता है. बट स्टिल such is the power of the name of the Lord that he protects even those who inadvertently pronounce his name. अनजाने में भी तुमने ईश्वर के नाम को याद किया. ईश्वर की करुणा की बात हो रही है यहां पे. ईश्वर की करुणा की बात हो रही है. भाव से तो तुम पुकार के उसको पा ही लोगे, नो डाउट अबाउट इट. ना भाव से भी अगर उसके नाम को पुकार लिया, उसकी करुणा तो देखो तुम जरा. वो तुम्हारी फेस वैल्यू पे जा रहा है. वो तुम्हारे कैरेक्टर को भी इग्नोर करने को तैयार है. देखो उसकी करुणा, उसका प्रेम तुम्हारे प्रति. वो कह रहा है तुम जैसे हो, तुमने नाम पुकार लिया ना, चल मैं आता हूं तेरे पास. तू पुकार तो सही. तू अनजाने में ही पुकार ले, तू किसी बहाने से ही पुकार ले, तू पुकार तो सही. ये प्रेमी की अवस्था है. ये इसको ऐसे समझो, दो प्रेमी हैं. एक प्रेमी जो तड़प रहा है कि तू मेरा नाम तो पुकार. उसने कुछ और सोच के किसी और अवस्था में नाम पुकारा, बट प्रेमी के कान में तो पड़ गया ना. वो तो भागा भागा आएगा. पता भी होगा कि नहीं पुकारा तो तूने उसको है, बट वो मधुर, मेरे नाम को तूने पुकारा, वो आ जाएगा भाग के. अद्भुत है. Like a strong and potent medicine, which even when swallowed unintentionally, still cures the sick man who has taken it. Even so Ajamila, because he said Narayana come here, has been saved from the punishment by Yama. क्या उदाहरण दिया. गोली का तो अपना असर है ना. तुम खा लो अगर नींद की गोली, उसका है ना अपना असर. वो तुम्हें सुला ही देगी ना. अनइंटेंशनली खाई, तुम सोना नहीं चाहते थे, बट उस गोली की अपनी प्रॉपर्टी तो है. सो इज द नेम. इसलिए नाम जप पे भारत के सभी धर्मों ने, सभी सेक्ट्स ने इतना जोर दिया नाम जप पे. वो गोली है, उसका एक असर है. और गहरे में जाएं अगर हम मंत्र विद्या पे, मंत्र यानी साउंड का विज्ञान. नारायण, ये साउंड है. इस साउंड में ही एक अपना विज्ञान छुपा है. जब इस वाइब्रेशन को मैंने पुकारा, नारायण, ये एक वाइब्रेशन है. ये अब वो उस नारायण को पुकारा या इस नारायण को पुकारा, उस वाइब्रेशन में कोई शक्ति है, वो शक्ति एक्टिवेट हो जाती है. इसीलिए भारत में ये प्रथा चली आई है. सबसे पुरानी प्रथा है ये भारत में. पूरी ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी में सबसे पुरानी प्रथा है भारत में, कि हम अपने बच्चों के नाम, अपने व्यापारों के नाम, अपनी दुकानों के नाम, अपने शहरों के नाम ईश्वर के नामों पे रखते हैं. वो ऊर्जा है, क्योंकि उस शब्द में वो विज्ञान है, उसकी एक वाइब्रेशन है. रावण नाम नहीं रखा जाता यहां पे, क्योंकि रावण के कर्मों ने उस शब्द की ऊर्जा को खराब कर दिया. तो यानी ये भी मतलब हुआ कि उस शुभ शब्द की ऊर्जा भी फाइनाइट नहीं है, प्रतिपल बदल रही है. तुम अगर गलत भाव से उस शब्द की ऊर्जा को लगाने लगोगे तो उसकी वाइब्रेशन बदल जाएगी. समझो इस बात को. जब कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, इन शब्दों पे इतना जप हुआ भाव से, तो ये शब्दों की वाइब्रेशन और गहरी होती जा रही है. और इसी प्रिंसिपल पे मंत्र काम करता है. जब तुम किसी भी मंत्र को साधने लगते हो, किसी भी नाम जप को साधने लगते हो, उसकी ऊर्जा एक्टिवेट होने लग जाती है. एक उसकी स्वयं की ऊर्जा और एक जो तुम्हारी चेतना उसमें ऊर्जा डाल रही है.
Naam starts to become activated in your consciousness. बहरहाल वो एक बहुत गहरा विज्ञान है, उसमें नहीं जाएंगे. A man can be a thief, a drunkard, one who deceives his friend, a killer of a Brahmin, one who lusts after his guru's wife, the killer of a king or a woman, father or a cow, or a man who has committed a sin greater than all these may exist. ये sins की व्याख्या की है कि ये बड़े अपराध माने जाते हैं. But the man of the Lord when pronounced, but the name of the Lord when pronounced will save him from the effects of the sins he has committed. नाम का गुणगान हो रहा है यहाँ पे, नाम की पावर का गुणगान हो रहा है यहाँ पे. If his child is called by Lord's name, if the Lord's name is spoken even in a jest, even if it occurs in a song sung for the pure pleasure, even if spoken in disparagement of the Lord, even under such circumstances, the very fact that his name is spoken is enough to make Lord compassionate towards him, and he will save the man. देखो वही बात आ गई, ईश्वर के कंपैशन की बात हो रही है यहाँ पे. If a man has a sudden mishap like falling down the steps or being stung by a serpent or suffering from a fever, if his subconscious self calls out the Lord's name out of sheer habit, even then he is saved. देखो परंपराएं भारत में, हम मिलते हैं लोगों से, हेलो नहीं बोलते, राम राम, राधे राधे. ये बार बार रिमेम्बरेंस है उस नाम की, किसी तरह से हमारे मुख पे है. इसीलिए जब गांधी जी मरे, उनकी समाधि पे वो जो शब्द उन्होंने लास्ट में बोला, हे राम, वो लिखा गया है. वो शायद इसलिए लिखा गया, लोग ऐसे देख रहे हैं कि हे राम मतलब कि गांधी जी इतने महात्मा थे, बट उसका दूसरा एंगल है. वो लिखा इसलिए गया कि देखो, इस आदमी ने मरते हुए राम को याद किया है, इसलिए हम इसको महात्मा बोल रहे हैं. ये महात्मा है इसलिए हे राम नहीं बोला इन्होंने, दुनिया ऐसा देखती है. मैं उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मरते हुए इन्होंने शब्द बोला हे राम, इसलिए हम इनको महात्मा बोलेंगे. कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया यहां पे. टू मी दैट वन लास्ट वर्ड which he uttered from his mouth earned him the title Mahatma. May not be his lifelong practice. That's the power of Nama. The great rishis have prescribed several kinds of atonements of several sins. Each sin has to be atoned for in a particular manner, and even after that, there is no assurance that the man will not repeat the sinful act. These rites are like temporary cure for a disease. They do not get to the core of the matter. They do not destroy the sin in the heart of man. However, surrender at the feet of the Lord destroys all sins. It kills the root of the sin. Consider a large expanse of darkness. It is not a tiny lamp enough to dispel it. क्या दूसरा अद्भुत एग्जाम्पल दिया. And if the lamp is kept burning steadily by being fed with the proper oil, darkness can never come to that spot. Darkness. अपराध किए अजामिल ने, बहुत अपराधपूर्ण जीवन रहा अजामिल का. डार्कनेस, एक छोटा लैंप जल गया और जलता ही रहा. नारायण इधर आ जाओ, नारायण मेरे पुत्र. वो लैंप जल रहा है, सतत ऑयल जल रहा है उस लैंप में. छोटा है वो, क्योंकि भाव नहीं जुड़ा हुआ उससे, बट उस छोटे से लैंप से भी वहां तो अंधकार नहीं आएगा. द नेम ऑफ द लॉर्ड इन्वोक्स थॉट्स ऑन द लॉर्ड, एंड दीज इन देयर टर्न मेक अ मैन लूज हिज सिनफुलनेस. द वासनास गेट डिस्ट्रॉयड ऑन देयर ओन अकॉर्ड, and man sins no more. This man Ajamil
did not know the power of the name of the Lord, and so you may say, what he did not do conscientiously cannot have any effect. You are wrong. Like a spark of fire touching a piece of wood accidentally, still burns it completely till nothing remains. Even so, his sins have all been burnt away. If you are still not convinced by our words, go to your master Yama and ask him if our words are true or not. ये सब समझाने के बाद नारायण के दूत बोल रहे हैं यम के दूतों को, अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो जाओ अपने गुरु, अपने मास्टर यम के पास और उनसे पूछ के आओ. They are so convinced of the power of the name of their master. क्या बात है. That's how chapter 65 ends. एक चैप्टर अगला लेते हैं. टाइटल क्योंकि अच्छा है. चैप्टर 66 टाइटल यमा एक्सप्लेन्स. पढ़ना पड़ेगा, आज ही पढ़ना पड़ेगा. The servants of Yama released Ajamila and went back to their master. They told him about the happenings on the earth, about how, when they went to bring Ajamila, they were prevented from doing so by some demigods. They recounted the discussions they had with the servants of Narayana. The servants of Yama said, "It has never happened before, my lord. You are the lord of Dharma, and till now, no one has been able to escape the punishment meted out by you. But today, 4 strange beings flaunted your authority. We captured Ajamila, but they cut the noose of death and released him. He spoke the name Narayana just before he died, and at once they came to his side." शिकायत लगा रहे. They would not let us do our duty. ऐसे ही होता है ना, सर्वेंट जाके बोलते. They told us so much about the glory of the name of Narayana and added that you would clarify the matter fully. Tell us why it has been so. Their words were so full of authority that we had to obey them. What strange power is that which saves the sinner from the noose of Yama? ये कौन सी शक्ति है? Contrary to their expectations, Yama smiled with happiness and spoke softly to them. यम भी मुस्कुरा पड़े ये सुन के. He said, "I have great power over the lives of human beings, and I have the power to punish them. You are right so far, but there is one above me, who I have to honor and obey." मेरा भी कोई बाप है. That is Lord Narayana. Have you seen a piece of cloth? It is woven out of threads, and they make up the woof and warp of the cloth. Even so, this entire universe is woven by him, and he is the power which causes the creation, the maintenance of the universe, and the destruction of this entire universe. Like a bullock led by the strings which runs through his nostrils, this world and those living in it are guided by the strings called the Vedas. All of us, Indra, Varuna, Vayu, Surya, all the guardians of the 8 quarters, and the Brahma and Agni, and in short, all the gods have not still been able to realize the glory of the Lord. कोई जान ही नहीं पाया उस ईश्वर की शक्ति को. Nor do they grasp his Maya. ना शिव को कोई जान पाया, ना शक्ति को, ना नारायण को, ना माया को. Man is endowed with the organs of sight, smell, touch, taste, and hearing.
For him to enjoy the objects of the senses, that is to say, for him to see, to smell, to touch, to taste, and to hear, there is something inside him which makes this function possible. That something inside the heart of man is the drashta, the seer. Drashta की बात हो रही थी. Man cannot understand the nature of this something inside him. दृष्टा तो पता है हमें, अगर ध्यान में हम गहरे उतरते हैं. नेचर क्या है इस दृष्टा का ये नहीं मालूम होता. He is so enveloped in the wheel called Maya that he clouds his intelligence and he is not able to realize the Atman inside him. There are very few who have understood the law laid down by the Lord. I am one of the few, and the others are Brahma, Narada, Sanat Kumara, Kapila, Manu, Prahlada, Janak, Bali, and Vyasa's son Suka Brahma. ये नाम इंपॉर्टेंट है. यम कह रहे हैं कि मेरे अलावा ये लोग हैं जिनको ये ज्ञान पता है. ब्रह्मा को पता, नारद को पता. नारद बार बार इसलिए अपीयर हो रहे हैं बिकॉज ही नोज. इसीलिए वो ग्लोरी गा रहे हैं बार बार नारायण. ही नोज. सनत कुमार, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद जो राक्षस हैं, राक्षस कुल के हैं प्रहलाद, उनको भी मालूम है. जनक, बाली, and Vyasa son Suka Brahma. The name of the Lord, when spoken constantly by man, is called Bhakti Yoga, and that is said to be the easiest path to the Lord. It is the greatest dharma to be practiced by man. By pronouncing it just once, see how Ajamila was saved from me and the deserts for his sins. दिखा रहे हैं, देखो एक बार नाम लेने से क्या हुआ अजामिल के साथ. Constant thought on the Lord is not just the destroyer of the sins. It also grants mukti, moksha, release from the bondage called karma. Those who have ever devoted to the Lord can easily be recognized. They will be even-minded. They will not be troubled by the opposites. They will have tranquility, and they are always protected by the armor, which is the Lord's name. देखो क्वालिटीज भी बता रहे हैं. ये क्वालिटी होंगी जिसमें ये ईश्वर, जिसने ईश्वर को रिकॉग्नाइज कर लिया है. I am telling you, you should never ever. I am telling you, you should never even go near such people. जिन लोगों ने ईश्वर का नाम जप करना शुरू कर दिया है, don't even go near to them, Yamadutas. Your victims are only those who have become so involved in the pleasures of the world that they have no thought for other things. They are caught up in the web of Maya, woven by the love of wife, children, home, wealth, and other pleasures. Brings to me the man who has never once pronounced his name, whose ears have never heard the stories of the Lord. वही लोग लाना मेरे पास इस मृत्यु लोक में जिन्होंने ना ईश्वर का नाम लिया ना सुना उनकी कहानियों को. Remember, the Lord's name is powerful enough to destroy all the great sins. Penance, tapas, vratas, and other forms of self-denial do not grant man so much grace. In future, remember, the devotees of Narayana are exempt from punishment by me. Special status है इनके पास. ऐसा नहीं है कि वो शरीर नहीं त्यागेंगे. शरीर तो त्यागेंगे. यमलोक नहीं जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे, शिवलोक जाएंगे, यमलोक नहीं जाएंगे. शरीर तो त्यागेंगे. इससे ये मत समझना मरेंगे नहीं. Ajamila, in the meantime, released from the clutches of death, fell at the feet of his saviors. Before he could speak, they vanished from his sight. Ajamila had heard all the words spoken by the participants in the discussion. उसको खुद नहीं पता ये क्या हुआ. Ajamila was filled with
repugnance when he thought of the life he had been leading till then. He spoke to himself, All I have been, he spoke to himself, I have been a great sinner. Because of my submitting to the temptations of the flesh, I have descended so low. All good men hate me and censure my behavior. I abandoned my young wife and my aged parents, who should have been cherished by me and honored by me to the end. It is true that I have been a great sinner, but then I have had the good fortune to see the servants of the Lord. I must have performed some good acts in my previous janmas, or else this would never have happened to me, or else this sinful tongue of mine would not have had the sense to speak the name of the Lord. यानी बेटे का नाम जो नारायण रखा और जो कॉन्स्टेंटली नारायण नाम से उसको पुकारते थे, कह रहे हैं ये भी किसी पास्ट जन्म के अच्छे कर्म थे कि बुद्धि चल गई और नाम नारायण रख दिया उसका, नहीं तो जिह्वा पे नाम नहीं आ सकता था। तो देखो कितनी सुंदर बात है कि जिह्वा पे नाम भी तभी आएगा कि पीछे कुछ तो संस्कार पड़ा है, और अगर नहीं है पीछे कोई संस्कार तो जिह्वा पे ईश्वर का नाम नहीं आएगा। तो क्या हो? साधु संग। वो फॉर्मूला भी दिया कि ना हो पीछे के संस्कार तो साधु संग करना, उससे फिर जिह्वा केपेबल बन जाएगी टू अटर द नेम ऑफ द लॉर्ड। अद्भुत है। What a distance there is between the holy word and me, a hateful sinner of the worst type. कितना अंतर है देखो। Now that I have been given a second chance, now that the Lord has assured me that my sins are all burned out, I will live a new life. I have been granted a new lease of life and I will try to use it profitably. I will fight my ignorance. I will try to shed the bondage of karma. I will be friendly towards all human beings. I will be at peace with myself and I will release myself from this world of sins by my own efforts. Statements देखो जरा, क्या बोलते हैं इसको आज के नए युग में? Affirmations. और ऐसा सुना कि affirmations was developed in the West. ये भागवतम में चल रहे हैं affirmations. कमाल देखो जरा. Let me repeat these again. Now that the Lord has assured me that my sins are all burnt out, I will live a new life. I have been granted a new lease of life and I will try to use it profitably. I will fight my ignorance. I will try to shed the bondage of karma. I will be friendly towards all human beings. I will be at peace with myself and I will release myself from this world of sin by my own self-efforts. Because of his momentary contact with the good, Ajamila was able to practice renunciation. He became a great devotee of Narayana. He had no attachments. He reached the banks of the river Ganga and there he meditated on the Lord. He was so sincere and so eager that soon he was able to find freedom from the bondage called the human body. Once again he saw the same servants of the Lord whom he had seen before, and he greeted them with a bowed head. His body fell lifeless on the river bank, and Ajamila became one with the Lord. Narayana, Narayana, Narayana. Adbhut. That's how chapter 66 ends. Oh.